Hey students, welcome to OCSY Ranjan YouTube channel. So आज हमें एसएसबी हिस्ट्री रो 2018 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा ठीक अच्छे. सो आम ऐप रे एसएसबी टेस्ट सीरीज गुड़ाक आरंभ हो जाइए. टेस्ट सीरीज गुड़ाक आरंभ हो जाइए ठीक अच्छे. सो शीघ्र जाए डिस्क्रिप्शन थिबा लिंक को क्लिक करी ऐप डाउनलोड करी आपण जॉइन हो जिवे ठीक अच्छे. जहाँ आपण को आगामी दिन में आसुवा एसएसबी जो एसएसबी एंट्रेंस पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो ठीक अच्छे. सो आम स्टार्ट करवा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु said the study of history is the study of causes. The study of history is the study of causes. So तारा ठीक आंसर है जो कि E.H. कार. Then question number 2, who is considered as the father of objectivity. Objectivity तो जो पढ़ी थी तार माने ये जानी थी कि फादर आम कौन हिस्टोरी ऑफ मेथोडोलॉजी जो पढ़ी थी तुम्हें तो जानी थी फादर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहुए ना वोल्टायर कहुए ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट question number 3, in historiography the idea of progress is related to. The idea of progress कहाँ सहित related ना R.G. Collingwood ठीक अच्छे. R.G. Collingwood तो correct option. Then the Nile river flows through two important regions in Egypt where Egypt को दुईटा इम्पोर्टेंस जगारू नाइल रिवरटा प्रवाहित होती. सो से तार करेक्ट ऑप्शनटा कौन हो अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट. सो जो यहाँ देखु आम ये मन आफ्रिका तो यहाँ है अपर इजिप्ट यहाँ है लोअर इजिप्ट ठीक अच्छे. एमती जा से मेडिटेरियन सी रे नाइल रिवरटा मिली ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following best describes how Egyptian civilization developed. So Egyptian civilization रो developed माने कोटा ताकू माने डिस्क्राइब करे ए चारटा ऑप्शन को माने इजिप्शियन सिविलाइजेशन फुली डेवलप थिला. सो कोड आइजबो ना सिटीज ब्रोक ऑफ इनटू स्कैटर्ड फार्म एटा जो तार करेक्ट ऑप्शन टा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज हम्मुराबीज कोड इम्पोर्टेंट. हम्मुराबी कोड कहीं इम्पोर्टेंट थिला. सो आम जाचे हम्मुराबी चार्टा कोड थिला गोटे सिविल कोड, पेनाल कोड, कमर्शियल कोड एंड कोड ऑफ प्रोसीजर. सो कहीं हम्मुराबी कोड है बहुत इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे. सो तार आंसरटा हो कौन ना सोल्जर्स यूज्ड इट टू सेंड मैसेज ड्यूरिंग बैटल ठीक अच्छे. देन सॉरी तार ठीक करेक्ट ऑप्शन हो कौन ना इट हेल्प एवरीवन टू नो द रूल्स एंड पनिशमेंट ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 7, द नेम द वर्ल्ड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेपर दैट वाज इन्वेंटेड बाय इजिप्शियन. सो कौन कौ पेपर को से इन्वेंट करते इजिप्शियन वाले कौ पेपर को. सो यहाँ हिरोग्लिफिक माध्यम यहाँ है मैंने रईटिंगटा. तो ऑप्शन ठीक कौटा हो 7 रो ए हो करेक्ट पापिरस हो तार करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 8, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट ऑल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ रिवर्स डिपोजिटेड रिच सॉइल सुइटेबल फॉर फार्मिंग. देन क्वेश्चन नंबर 9, Confucian philosophy was an important because the teaching of Dax what so ruled many aspects of Chinese life. Question number 10, which golden age person would have been most interested in understanding how government should function. Which golden age people or which golden age person. So it was a Plato. Then question number 11, what style Roman
what style was Roman art? Roman art को style रे थिला ना एटा थिला realistic and idealistic. Then question number 12, what Greek style did Roman poets imitate? What? So it was idealistic heroism. Then question number 13, Seljuk Turks captured the Holy Land Jerusalem from Romans in which year? So it is about 1453, the fall of Constantinople. Constantinople कौन capital of Romans. ये Romans वालों का capital दिला सर. Then who established printing press in 1477 in at Britain? So first किए मतलब printing press टा establish करते ला मैं जो जोहानस गुटेनबर्ग के भी ना जोहानस गुटेनबर्ग 1454 रे हेले एटा ब्रिटेन रे किए फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टा माने कोन इन्वेंट करछि सेटा हे जबो किए ना सेटा हे जबो हमरला कैक्सटन ठीक अछि. Then next question number 15, Dante's famous work which deals with hell, purgatory and paradise was what? The Divine Comedy. Dante rola Divine Comedy. Next question number 16, the masterpiece of printing Mona Lisa was made by Leonardo da Vinci. Who invented weaving machine in 1825 which accelerated and revolutionized cloth weaving? Who ki invent करथिला तो एटा हितो तार करेक्ट ऑप्शन है रिचर्ड रॉबर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 18, before practical invention of telegraph machine, a blind Englishman started a system in 1840 through which anybody could send a letter to any place. His name was, so who किए थिला तार ना कौन थिला तार ना थिला राउलैंड हिल थिला. Then question number 19, the chief architect of Suez Canal रो chief architecture किए Suez Canal रो chief architecture हला किए हमर हला ये गोटे ऑप्शन अछि फर्डिनांड डे लेसेप्स. Then question number 20, during the socialist industrialization in Soviet Russia, 5-year plan were initiated. The first year 5-year plan laid emphasis on, so जो रशिया रे फर्स्ट 5-year plan हेता था को बेसिस रे हितला ना ता हेतला कोन ना कलेक्टिव फार्मिंग तार एम थिला कलेक्टिव फार्मिंग. Then question number 21, which newspaper played a decisive role in America's war of independence? को न्यूज़पेपर टा एटा बॉस्टन न्यूज़लेटर. नेक्स्ट, थॉमस पेन्स बुक दैट ignited people's love for their country during America's war of independence was read as what? So it is about common sense तार बुक है common sense. Then next question number 23, on June 20th 1789 at a French Revolution the representative of a national council pledged not to separate from one another until constitution is drafted. The famous oath was popularly known as कौन कह जाता से ओथ को ना कहला टेनिस कोर्ट ओथ कह जाता. ठीक है. Then the headstrong and despotic French ruler who used to say a thing is legal because I want it, किए कही. सो तुम मैंने जिते फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ुच लुइस 14, 15, 16 ए मैंने डिफरेंट माने कौन ना गोटे गोटे वाक्य अच्छी है गोटे गोटे उक्ति अच्छी. सो जमीक आम लुइस 14 कौन कहते लुइस 14 कहते आई एम द स्टेट बोली कहते. देन लुइस 15 कौन कहते से आफ्टर मी द डेल्यूज. देन लुइस 16 कौन कहते लुइस 16 कहते द व्हेन ओ गॉड व्हाट ए बर्डन ऑफ माइन एंड दे हैव टॉट मी नथिंग क्या कहते. सो ये उक्ति किए कहते ए थिंग इज लीगल बिकज आई वांट इट
तो ये किए कहीदे सो यहाँ कि लुईस 16 कहीदे लुईस 16 देन नेक्स्ट before the revolution the French society was divided into three classes. The third classes or the common classes consisted so जो फ्रेंच रिवोल्यूशन पड़ो सोसाइटी रे तीन भाग रे भागे गोटे आम क्लर्जी क्लास देन नोबिलिटी एंड आउ गोटे जोटा कि थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास माने फर्स्ट स्टेट रे क्लर्जी माने थे सेकेंड स्टेट रे नोबल्स माने एंड थर्ड स्टेट रे किए आम कौन थे कमन क्लासेस थे तो से कमन क्लास क्यों मैंने आसबि सो करेक्ट ऑप्शन रही बी मिडिल एंड लेबर क्लासेस मिडिल जिनको बुर्जोइज मान भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द प्लेस इन बॉस्टन where the famous incident of Boston Tea Party took place was एटा अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस आसीगला देन सो माने ये जो बोस्टन टी पार्टी होता है कौ जगह होता तो सेटा होता आम पोर्ट रे से मैंने जहाज टी गुड़ाक फिंगी देकी बोस्टन टी पार्टी करते ठीक अच्छे. देन द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी फाउंडेड 1810 which played a crucial role in unification of Italy was founded by so एटा किए करथिले चारकोल बिजनेसमैन माने फाउंड करथिले कोडा कार्बोनारी पार्टी. देन who said that to start a revolution in a society hand over the leadership to the young immense the power lies dormant in the heart of the young people. एटा किए कहिथिले या कहिथिले किए मजिनी गुसेप मजिनी. Question number 29 the struggle for the unification of Italy was led by Sardinia, Piedmont, Naples, Sicily, Lombardy, Venetia, Papal State. So एटा थिला इटाली रो अलग स्टेट्स गुडा कहि सब सो सब स्टेट गुडा किए फ्रांस हाथ में किए माने फ्रेंच हाथ में किए जर्मनी हाथ में किए को स्टेट्स माने आमर इंग्लैंड हाथ में सब हाथ में थिले सो हेले दीटा सी स्टेट माने इंडिपेंडेंट थे जी कि माने यूनिफिकेशन इटाली को लीड करते हैं कि पिडमोंट सार्डिनिया ठीक अच्छे. देन 32 काउंटर द मैटरनिक सिस्टम एंड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1815 बाय ए फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ जर्मनी. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज व्हाट सो इट इज द Burschenschaft. Question number 31 which state led the struggle for the unification of Germany? Which state सेटा हम टिका कर पड़े इटाली रो किए लीड करथिला इटाली को देन एडेला जर्मनी को किए लीड करथिला सो जर्मनी को लीड करथिला किए प्रूशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 the humility treaty which France had signed after he defeated at the hands of Prussia in 1871 was who treated so एटा हिजो हमर ट्रीटी हिजो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट क्वेश्चन नंबर 33 who believe that a treaty of friendship which does not aim at war is useless. सो एटा किए कहिदिले माने एटा किए कहिदिले सो एटा कहिदिले किए हमर हिटलर. देन whose death spark world war फर्स्ट जोड़ा इमिजिएट कज थिला कहा को माने कहार मर्डर रे वर्ल्ड वार स्टार्ट हेदिला बोली कहगला सेडला आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड जाको इमिजिएट कज मध्य कहा जाए. देन व्हिच ऑफ द शिप्स sunk by a German submarine which resulted in America's entry into the First World War. Which ship अमेरिकार कौ शिप को कौ सबमरीन को जर्मनी ऑक्युपाई करदेला वा संक करदेला जाफल अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार को आसी जाइला. सो एटा हो कौन एटा लुसिटानिया. देन नेक्स्ट व्हेन डिड जापान अटैक पर्ल हार्बर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार. व्हेन डिड जापान अटैक पर्ल हार्बर इन सेकेंड वर्ल्ड वार केबे अटैक करथिला ना 7 सेप्टेम्बर 1941. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 which country was annexed by both Germany and USSR during second world war. सो गोटे जगह पर ही सेटा ही जोड़ा कि जर्मनी रो भूल थिला
माने हिटलर भूल थिला जो जगह को से ऑक्युपाई कला पर से कना यूएसएसआर ऊपर माने अटैक कर दिए तो सेटा तार बहुत बड़ा भूल सो को गोटे जगह जोटा कि जर्मनी आउ एपटू यूएसएसआर एपटू जर्मनी माने ऑक्युपाई करबा एनेक्स करथिले सो सेटा हे हम कोन पोलैंड को पोलैंड ठीक अछि पोलैंड then how many countries signed the charter of UNO in 1945 so 1945 रे फर्स्ट यूनियन स्टार्ट हेतला तो केते जण सदस्य सेठी कोन साइन करथिले से चार्टर को तो एडा हे हमर कोन 51 then who among the following dictators did participate in world war second रे को माने डिक्टेटर पार्टिसिपेट करथिले एडल्फ हिटलर पार्टिसिपेट करथिला बेनिटो मुसोलिनी पार्टिसिपेट करथिला तोजो फ्रांसिस्को फ्रैंको ये चार जन माने चार जन ही डिक्टेटर सो एडा गैस मार्क थिबो माने एडा चारटा ऑप्शन इज करेक्ट देन व्हाट वर द टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जो कोल्ड वॉर स्टार्ट है सो कहाँ मध्य रहता ना सोवियत यूनियन आउ यूनाइटेड स्टेट मध्य सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट मध्य देन which of the following is not a permanent member of United Nations Security Council और सिक्योरिटी काउंसिल रो किए परमानेंट मेंबर नुह सो एटा हिजबो इजराइल देन क्वेश्चन नंबर 42 which of the following alliances was formed to block communism in Europe so रशिया रो कम्युनिज्म को यूएसएसआर रो कम्युनिज्म को रोकिया पाई कोउटा माने कोटा माने तैयारी करागला क्या द्वारा अमेरिका को रोकिया पाई कोड़ा तैयारी करथिला ना नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटो ठीक अच्छी क्वेश्चन नंबर 43 द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वार्सो पैक्ट वाज काउंटरिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वार्सो पैक्ट वाज काउंटरिंग इज व्हाट imperialism and capitalism the Berlin Wall crisis was brought into in which of the following year which year so एडा ये वक्त तारा करेक्ट ऑप्शन है 1961 question number 45 the Soviet Union wanted to build a missile base in Cuba in which year 1962 then next question number 46 name the German emperor during the first world war German emperor किए थिले ना से थिले काइजर विलियम then who drafted the treaty of Versailles को किए ड्राफ्ट पर किए लिखि थिले सेटा हला वुड्रो विल्सन which of the following new nation born after the first world war पर को न्यू नेशन रे born हेतिला ना फिनलैंड then which of the country invaded Rhineland in 1936 touching of a series of events that eventually led to the start of the World War II so कोडा so एटा हिजो तार करेक्ट ऑप्शन हिजो हमरा जर्मनी सी question number 50 what was the name of the German Air Force during the Second World War रे German Air Force रो नाम कोन थिला ना Luftwaffe option number 1 Luftwaffe then question number 51 what is the meaning of Gestapo रो मीनिंग कोन ना Gestapo रो मीनिंग हैला सेक्रेटरी एजेंसी ऑफ हिटलर जो सेक्रेटरी एजेंसी थिला हिटलर ताको Gestapo कहला then the Cold War turned hot in which region of the globe माने एटा तार कहवा मन अछि कि ए जो कोल्ड वार टा थिला ठीक अछि कोल्ड वार टा को जगह रे वर्ल्ड रो को जगह रे सर्वाधिक देखिया को मिलथिला बा बहुत को जगह रे यार इफेक्ट बहुत पड़थिला सो सेटा हे जो किना यूरोप कोडा यूरोप देन question of 53 which of the following doctrines promised to aid nations struggling against communist movement कोडा so एटा जीवो ट्रोमन डॉक्ट्रिन next question number 54 who was the leader after China's civil war had ended who was the leader किए ना एटा तो
माओ जेडंग बा माओ से तुंग भी कहा माओ जेडंग the policy that said the United States would respond to communist threats by the threat of using powerful weapons was known as what? तो यह कौन कहा गला ना यह कहा गला ना a massive retaliation. A group of left-wing writers, directors and producers refused question during their trials of communism was called as तुम जानते हो लेफ्ट विंग कौन राइट विंग कौन लेफ्ट विंग मैंने जो फ्रीडम इंडिपेंडेंट ए सब ऊपर जो आइडियोलॉजी था और राइट विंग मैंने जो अनार्की सॉरी मोनार्की देन कौन मोनार्की इंपेरियलिज्म ये सब ऊपर मैंने कौन ना आइडियोलॉजी था सो ये 56 आंसर कौन हो 56 हो हॉलीवुड 10 then the victors in the Chinese Civil War were the who victors माने किए थिले जे कि सपोर्टर्स ऑफ माओ जेडंग रो सपोर्टर थे ताको victors in the Chinese Civil War बोली कहा then question number 58 what was the meaning of the Japanese term kamikaze रो मीनिंग कौन ना डिवाइन वाइन ठीक अच्छे डिवाइन वाइन then next question number 59 the filter down manufacturing industry and services from developed countries to NICs and developing countries is term what global changes कौन changes ना global changes sorry global changes no global shift एटा ला global shift then question number 60 an economy that grows very rapidly is often referred as कौन कहते हैं very rapidly जो इकोनॉमी ग्रो हुए ताको टाइगर इकोनॉमी कहा जाए टाइगर इकोनॉमी देन न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज फर्स्ट एमर्ज इन द 1960s एरा रे न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज गुड़ा को एमर्ज करते हैं देन क्वेश्चन नंबर 62 Vietnam is an example of what Vietnam is example of fourth generation NIC then which of the following is not an element of AT Kinery index of globalization कोड ना एटा है a sporting connection then according to 2009 KOF index of globalization which country was the most globalized in world so it is Belgium ना Belgium then question number 65 world system theory is credited to Immanuel Wallenstein question number 66 the main political aim of America in the global map is monopolizing scientific invention एटा था तंकर main aim question number 67 the archaeological site of Ropar was explored in 1955 by whom एटा इंडियन हिस्ट्री में पले आसले कहा द्वारा बीबी लाल ठीक अच्छे बीबी लाल then the dated of the Rig Veda as 1200 ରୁ 1000 BC was given by ए 1200 ରୁ 1000 माने टाइम ऋग वेद को किए देथिला माने किए एको आइडेंटिफाई करथिले ना या हेतिला किए हमरो बीबी लाल ठीक अछि सॉरी ऊपरटा हो आमर कौन यहाँ बीबी लाल ना मुझे बीबी लाल कही दूसरी यहाँ हो किए वाई डी शर्मा ठीक अच्छे वाई डी शर्मा ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 द प्रेजेंस ऑफ एन inscription of 9 letters was found from which Harappan site so 9 letter जो inscription टा अच्छी सेटा को हरप्पन साइट रे मिलची कालीबंगन कोडी अच्छी राजस्थान then which of the following provide us the first literary evidence on the South Indian kingdom so एटा फर्स्ट साउथ इंडियन किंगडम को माने लिटरेरी सोर्स को हमको एविडेंस मिले एटा है इंडिका then who divided Vedic deities into 3 categories in his work किए ना E.W. हॉपकिंस
Then question number 72. The Neolithic site of Burzahom was the first identified by whom? किए एटा करथिले एज डे टेरा. Then Kuchai and Golbai Sasan are the Neolithic site from which state? Odisha state. Odisha state. ठीक अच्छी. Then question number 74. The ruins of Harappan were first noticed by. जो हरप्पन मानकर रुइन्स मिलता ता कहा द्वारा फर्स्ट नोटिस करागला ना या होची तार करेक्ट ऑप्शन हो चार्ल मैसन. Where is the Indus civilization city Lothal located? एमने हम राजस्थान को कहलु कालीबंगा राजस्थान अच्छी. सो लोथल कोड अछि गुजरात. Then question number 76. Which of the following is not related to heterodox philosophy? Brahminism, obviously. Then question number 77. Mahavira belong to which clan? Mahavira belong to the which clan? Lichavi clan को से belong करते. Then the first Buddhist council was held in राजगृह. तक मु तुमको गोटे ट्रिक कौची रा भ पा क राजगृह वर वैशाली पीरे पाटलिपुत्र देन करे कश्मीर रा भ पा क एटा मन रखि दिबो. तो किए लेड करथिले ए के एमती मन रखि दिबो. ठीक अछि ए के. सो एटा मन थिबो एटा अजात शत्रु. ठीक अछि अजात शत्रु. देन तापर कलाशोक एटा हैला कि ए रहला अशोक और लास्ट हैला कनिष्क एमती मन रखि रा भ पा क ए के एमती. ठीक अछि. देन एटा तार आंसर हो राजगृह. नेक्स्ट हैला इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड टू एज परफेक्ट नॉलेज क्या रेफर करा परफेक्ट नॉलेज है जीन मान रेफर कर. देन क्वेश्चन नंबर 80. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय द अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर? किए को मान को माने जस्टिस करने अशोक एम्पायर रे माने कौन करथिले अपॉइंट करथिले को मान. तो से तार आंसरटा हो किए राजुक मान. देन अशोक कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट कोटी एवं कही जोड़ा रा भ पा क थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कोटी है पाटलिपुत्र. ठीक अच्छे पाटलिपुत्र. ठीक अच्छे. सो देन क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following Ashokan edicts is known as Queen Edict? Queen Edict क्या कहते जोड़ी आम कारुबाकी मेंशन देखा मिले कौ एडिक्ट देखा मिली ना सेटा है आम कौन ना माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड. Which among the following is the oldest dynasty? Oldest dynasty कौन? Oldest dynasty है आमर मौर्य dynasty. Which dynasty was the first to introduce gold coins on a significant scale? Significant scale माने एटा किए फर्स्ट माने इंट्रोड्यूस करथिले सेटा कोनी माने क्यों माने फर्स्ट टाइम यूज करे सेटा कोनी माने अत्यधिक मात्रा क्यों माने माने यूज करथिले ना सेटा हेजबो किए हम गुप्त. ठीक अछि. देन और को माने जदी माने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन यूज करथिले सेटा हेजबो कुषाण. So question number 85. The term Samanta meaning a feudatory from the 6th century AD originally meant a Samanta means कौन 6th century विषय कौन थिला सामंतर means है cultivator. ठीक है सामंतर means थिला cultivator. Question number 86 देखिबा. Okay. Who was the founder of the Gupta Empire? Gupta Empire रो founder किए थिले ना चंद्रगुप्त फर्स्ट. Then which Chinese pilgrim came to the court of Chandragupta II? Chandragupta II के टाइम रे क्यों चाइनीज पिलग्रिम टा आसथिले भारत को तो सेटा हेजबो किए फाहियान हुनसान तो हर्षवर्धन को टाइम रे आ ओडिसा को 738 to 739 रे आसथिले सॉरी 639 to 638 to 639. ठीक अछि. Then question number 88. What was the yearly capital of Cholas of the Sangama age? संगमा एज रे चोलस मान कैपिटल कौन थिला ना उरायूर थिला. देन क्वेश्चन नंबर 89. द चोलो डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयलया. Then question number 90.
The segmentary state that the segmentary state theory was formulated in Chola dynasty by segmentary theory किए आप formulate करथिले ना बर्टन स्टेन. Next question number 91. Who introduced the famous Persian festival of Nowruz? Nowruz festival किए introduce करथिले ना बलबन गयासुद्दीन बलबन. Under whose reign Diwani Arch became a separate department. दीपानी अर्ज कहा एक माने टाइम रे सेपरेट डिपार्टमेंट हो गला एटा बलबन टाइम रे ठीक अछि बलबन टाइम रे. देन which commander of Alauddin Khilji defeated Yadav king Ramachandra? एटा यादव किंग माने साउथ आसी गला साउथ जितेबेले आसी जीव सेतेबेले तार के लीड करथिबा मलिक कफूर. एटा ही मलिक कफूर साउथर्न कैंपेन रे अलाउद्दीन सपक्ष रे लड़ुतिला से माने अलाउद्दीन पाई. देन क्वेश्चन नंबर 94. Why did Muhammad bin Tughlaq introduce token currency? Token currency काहे किसी introduce करथिला ना to overcome the global shortage of silver. Then question number 95. Which of the following sultan tried to organize the army on the decimal system after the Mughal pattern? Which sultan? So Muhammad bin Tughlaq. Then next, which of the following Delhi sultans sought and secured the letter of investiture from the Khalifa? Khalifa रो की letter of investiture पाइथिला ना सेटा हैला Muhammad bin Tughlaq. The Chidambaram identify as the cult of Chidambaram cult कहा सब मैंने identify करा है Chidambaram cult को एटा ही जो किए शिव. The goddess Meenakshi identified as मीना माने कोड़ा हैला fish तो obviously एटा correct option टा. Who was the first saint of Chishtiya order? Chishtiya order of first saint किए थिले अबू इसाहक सामी. अबू इसाहक सामी. Question number 100. Who among the following Rajput were the first voluntarily submit Akbar? को माने first time Akbar under submit करथिले एडवा कच्छवाहास. How many Mughal provinces were there under Akbar? Akbar को under कितने माने कितने टी Mughal provinces थिला तो तार आंसर है जीवो हमर 15 टी ठीक अछि. Then next question number 102. During Akbar's reign, a group of scholars translated Mahabharata into Persian from Sanskrit. What is this Persian version called? कौन कहला से महाभारत को माने जोड़ा पर्शियन लिखा था राजम नमः कहला से ठीक अछि. Then question number 103. Taj Mahal was designed by के ताजमहल कहा द्वारा डिजाइन है थिला के डिजाइन करता ताजमहल को उस्ताद ईसा. Which of the building of Shahjahan had the peacock throne? शाहजहां पिकॉक माने जो मयूर सिंहासन को बिल्डिंग रे अछि ना एटा अछि दीवानी आम रे ठीक अछि. देन सूरदास बाईजू बरवा रामदास were the famous singers during the time of whose reign? सूरदास बाईजू रामदास वे तो कहा टाइम रे माने फेमस सिंगर गुडा थिले अकबर टाइम रे. Then the French traveler Francois Bernier served as a physician to Francis Bernier कहा as a physician हिसाब रे माने देखा गले तो एटा हे जबो के औरंगजेब. So how many Mughal provinces were under the Aurangzeb? So जेते बेला हमें अकबर पढ़थले केते थिला ए ऊपर थिला एटा हम पढिछु टिके कर 15 टी. देन औरंगजेब टाइम रे केतोडे हे गला औरंगजेब टाइम रे हे गला 21 टी. Shivaji died as premature death as the age of 50 रे तंकर डेथ थिला 130 to 180 sorry 1630 to 1618 तंकर माने डेथ ओवर.
हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनर ऑफ गोरिल्ला वारफेयर ड्यूरिंग द मराठा पीरियड किए एटा हो किए हम करेक्ट ऑप्शन हो मलिक अंबर क्वेश्चन नंबर 110 द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज colonial Clive Jekyll and his puppet नवाब क्या कहगला colonial puppet नवाब बोली क्या कहगला सो एटा कहगला आमर क्या को मीर जाफर को देन what was the prime cause of Sirajuddaula defeated at the battle of Plassey रे सिराजुद्दौला माने कौन कॉज तार डिफिटेड सो एटा हो किए लॉर्ड क्लाइव माने रॉबर्ट क्लाइव रो लीडरशिप देन द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ परमानेंट सेटलमेंट के 1773 रे तो कहा द्वारा माने को मान को मेड हेतला तो जमींदार सा देन Raudwari settlement was primarily introduced in the region of को region रे महलवारी ता इंट्रोड्यूस हेतिला सो एटा हेजिबो को माने एरिया रे मद्रास एंड बॉम्बे रे महलवारी देन द बोन ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया हु रिमार्क दिस इन 1834 किए एटा कहिथिले सो एटा कहिथिले किए एटा हला हमरो विलियम बेंटिक कहिथिले देन 115 which of the following system established direct relation between peasantry and government so like तारा आंसर एटा कोन है जिवो 115 क्वेश्चन हला एटा रौदवारी सिस्टम then who was the first to formulate the theory of three successive phase of colonialism so एटा है किए दादाभाई नारोजी सॉरी कार्ल मार्क्स Question number 117. The first state annexed by Lord Dalhousie by his doctrine of lapse policy रे first state कौन जहाँकि लॉर्ड डेलहाउसी कैप्चर करते सेटा है सतारा then subsidiary alliance system was started by whom के लॉर्ड वेल्सली इटा से स्टार्ट करते सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल इन 1875 मुझे आम कौन ब्राह्मण समाज किए सॉरी आम राजा राम मोहन रॉय के 1828 और 29 देन ब्राह्मण आर्य समाज दयानंद सरस्वती के फैन करते से भी 1875 रे ठीक अच्छे देन 120 which of the following programs of Arya Samaj contributed to the growth of communalism in India कोड़ा growth of communalism कहला सो सेटा तार आंसर है जिवो ऊपर थिबो द शुद्धि मूवमेंट which of the following task was closest to the heart of the sir Syed Ahmad Khan कोड़ा सो एटा है जिवो promotion of modern education during the first 20 years of the Congress who was the following acted as the president of INC Trace तीन थर किए कोड़ी माने 1885 रु 1905 ये 20 वर्ष मध्य रे ठीक अछि किए तीन थर कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेथिले किए तीन थर कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेथिले तो दादा भाई नारोजी who was the instrumental in founding the National Planning Committee in 1938 किए इटा जब जवाहरलाल नेहरू then दादाभाई नारोजी was elected to the British House of Commons as a member of which party को पार्टी माने member as a member हिसाब से Liberal Party then 125 who among the following acted as the president of the Indian National Congress for 6 consecutive years किए इटा हला दादाभाई नारोजी the founder president of Harijan Sevak Sangh was who एटा हले GD Vimla next question number 27 the Congress decided to raise a Swaraj fund of 1 crore rupees for कहाँ पाई so एटा थिला non cooperation movement पाई then Subhash Chandra Bose was
re-elected as president of the Congress at the Tripura session in 1939 by defeating କାହାକୁ defeat କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରାଗଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା. Then question number 29, who was the founder of the Hindu College of Calcutta? Hindu College of Calcutta founder किए ना एड़ा जीवो डेविड ह्यूम. Then Mahatma Gandhi first experiment with the technique of सत्याग्रह in चंपारण रे से first time माने गोटे मूवमेंट बा सत्याग्रह स्टार्ट करथिले. Then question number 131, who led the civil disobedience movement? Who led the civil disobedience movement after the arrest of Mahatma Gandhi? अब्बास तैयबजी के अब्बास तैयबजी लीड करथिले. Then question number 132, in which movement women participation was in massive scale for the first time? को टाइम रे ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम. ठीक अच्छी. Then question number 33, in which century the Kalinga king named Kharavela of Cheta dynasty emerged? को माने टाइम पीरियड तार आम माने बेसिकली आम खारवेला टाइम कौन को 1 century BC to 1 century AD. सो ठीक अच्छे AD हम फर्स्ट सेंचुरी AD. Then question number 134, according to the popular belief system, what was the immediate cause of the Kalinga War? Kalinga War immediate cause कौन थिला ना Kalinga War immediate cause थिला love story with Karubaki. Then which edict gives the information about the suffering and casualty of the Kalinga War? Rock Edict 13 शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान जोड़ा अच्छी. Then 136, the most important politico religious achievements of the Kharavela was खारवेला मोस्ट अचिवमेंट कौन थिला पॉलिटी और पोलियो रिलीजियस माने सेक्टर रे. सो तार आंसर है आमर रिक्लेमेशन ऑफ पिथुंडा. देन 137, द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन वाज रिटेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल? को स्टाइल रे लिखाई छी हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन टा? हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखाई छी काव्य स्टाइल. सो क्वेश्चन नंबर 138, who was the grandfather of Somavanshis ruler Tivaradeva? So Tivaradeva grandfather किए थिले सोमवंशी रूलर जी. सो किए तिवारदेवंकर ग्रैंडफादर किए थिले? तो एड़ा है जब आम कौन ना इंद्रवलम. देन महाशिवगुप्त जजाति फर्स्ट शिफ्टेड हिज कैपिटल सिटी टू कोडी को मैंने कैपिटल सिटी को शिफ्टेड कर देले ना विनीतपुर को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द वज्रहस्त 5 बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? वज्रहस्त 5 को फैमिली को बिलोंग्स करथिले ना वज्रहस्त हैला कोडी की ना वैदुम्बा को बिलोंग करथिले. देन अनंतवर्मन चूड़गंगा देव हैड रूल्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? चूड़गंगा देव केते वर्ष शासन कले? 67 वर्ष शासन कले. देन question number 142, what was the most important cause for the downfall of the Ganga rule? Ganga rule downfall होबार कारण कौन? तो एटा इकोनॉमिक imbalance. Then which was not a part of southern campaign of कपिलेंद्र देव? तो कपिलेंद्र देवंकर साउथर्न कैंपेन जैसा कोटा नुह बोली एटा कहा जाए कोटा नुह. सो एटा है आंध्रा. ठीक अच्छी. देन क्वेश्चन नंबर 144, in the which popular legend पुरुषोत्तम wanted to marry the beautiful पद्मावती? कोटी एटा आम समस्ते जानी ओडिया घरे घरे कौन कांची कावेरी एटा कांची कावेरी. ठीक अच्छे. देन which was most formidable rival of Odisha during the time of सूर्यवंशी गजपति? गजपति मानकर माने formidable rival किए थिला? प्रमुख शत्रु किए थिला ना एटा थिला आमर विजयनगर. ठीक अच्छे. देन 146, फ्रॉम व्हिच प्रिजन श्रीकर भंजा ही एस्केप्ड इन 1818 एंड केम टू द घुमसर? एटा घुमसर रेबेलियन कथा आसीगला
सो श्रीखर भंज को माने को प्रिजन रू सो एटा हो आम कौन ना ब्रह्मपुर प्रिजन देन क्वेश्चन नंबर 147 द खिजिंगा कोटा इज लोकेटेड इन द मॉडर्न डे विलेज एट खिजिंगा कोटार अच्छी खिजिंगा अच्छी आमर आ खिचिंग ठारे खिचिंग देन 148 which of the following princely state merged with Odisha on 1st January 1914 के ना मयूरभंज then 149 the treaty of Devgaon held in 1803 between the East India Company and कहाँ सह होइतिला ना एडा होइतिला रघुजी भोसले थर्ड सह तापरे इंडिया माने ओडिशा रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल स्टार्ट हो गला then next question number 150 during the first decade of British rule in Odisha an explosive situation was created due to what due to imposition of Bengal revenue regulation question number 150 रो एला option correct then question number 151 which of the following day Captain La Farve marched toward Khurda कौ दिन से मैंने कैप्टन ला मारवे फारवे तो मैंने खुर्दा आड़ को मार्च कले तो एटा हो 9th April रे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डायड संबलपुर किए ब्रिटिश ऑफिसर डायड होता से गला मेजर एम्पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 द टर्म घेंस ब्रदर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियन और मूवमेंट घेंस ब्रदर क्या सह जड़ित ना वीर सुरेंद्र साय सहित ठीक अच्छे देन वीर सुरेंद्र साय डायड ऑन 1884 एट द एज ऑफ 90 ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन द 27 डेलीगेट्स फ्रॉम ओडिशा अटेंड हिस्टोरिक कांग्रेस सेशन कौ कांग्रेस सेशन रे 27 डेलीगेट्स ओडिशा रु जाइथिले ना सेटा हे गला नागपुर सेशन देन द उत्कल हितैषिणी न्यूज़पेपर वाज ए पब्लिश्ड वीकली तार करेक्ट ऑप्शन रह बी वीकली देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका एडिटर कह जाए फर्स्ट एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका किए ना एटा हो आमर कौन गौरीशंकर राय देन क्वेश्चन नंबर 158 in September 1920 गोपबंधु दास attend the special session to the National Congress at 1920 जिते बेले हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलता से गोपबंधु दास मैंने 1920 कौ सेशन रे कौ जगार सेशन रे से अटेंड करते तो एटा हो आमर कौन ना कलकत्ता सेशन देन 159 द लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ब्रजमोहन पंडा बिलोंग्स टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा को डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते से संबलपुर को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 द सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमिटी विजिटेड ओडिशा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कहा चेयरमैनशिप अंडर रे ओडिशा को सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमिटी आसला हकीम अजमल खान एड़ा तार करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 161 द प्लेस पापड़ाहांडी of Nagarangpur district was related mainly in नवरंगपुर पापड़ाहांडी कौ पटे माने कौ मूवमेंट को रिलेट करे सो ये गला आमर कौन ना क्विट इंडिया मूवमेंट को रिलेटेड कर देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला मेन ऑब्जेक्टिव थिला टू एस्टाब्लिश रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ठीक अच्छे करेक्ट ऑप्शन है डी then during the time of Prajamandal movement the tribal population in Nilgiri रे केते परसेंट पॉपुलेशन ट्राइबल थिले एटा हे गला केते हमरो 15% ठीक अछि करेक्ट ऑप्शन है जो 15% देन क्वेश्चन नंबर 164 द न्यू कांग्रेस मिनिस्ट्री अंडर Mahatab's leadership was sworn in when Hare Krishna Mahatab when 23rd April 1946 and our final question under whose leadership the capital city of Bhubaneswar was constructed कहार ना हरे कृष्ण महाताब ठीक अच्छे
सो यहाँ थिला आमर फुल 165 क्वेश्चन एंड आंसर. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.